Hello friends, welcome to Job and Wage Costing Solution. This question was asked in Sauras University examination in March 2019. फ्रेंड्स पहले ये वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में है। सो फ्रेंड्स आई होप यू हैव रीड दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें इंफॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग वन जॉब नंबर 107. In this information material is available for the job, that is rupees 9,000. Then wages are available. Here in the details of wages we can see that कि यहाँ चार डिपार्टमेंट्स है S, R, Q और P. And wages information is given here like hours and rate per hour. For example, in S department 150 hours and rate per hour is 6 rupee. In R department 90 hours 5 rupee rate. In Q department 60 hours 3 rupee rate, and in P department 30 hours and rate is 2 rupee per hour. Other information includes variable overheads for these four departments were estimated as follows. यहाँ हमें ये जो चारों डिपार्टमेंट है एस, आर, क्यू और पी, उसके जो वेरिएबल ओवरहेड्स है वो दिए गए हैं. दैट इंक्लूड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स. After that, labor hours are available for all these departments S, R, Q and P. Here we can see that for S department 5,000 hours, R department 4,500 hours, Q 3,000 hours and P 500 hours. Fixed overheads are estimated rupees 85,000 for 17,000 normal working hours. इसका मतलब है कि टोटल जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है वो 85,000 है जो 17,000 आवर्स के लिए है. तो हियर वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर द जॉब नंबर 107 एज वेल एज सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब व्हेन 25% प्रॉफिट we have to charge on selling price. So let's calculate the answer of this question. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस फॉर जॉब नंबर 107. इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट दिस wages or labor because here department wise hours are available and we have to multiply these hours just with the given rate. So for department S 150 hours multiply with per hour rate 6, we will receive 900. Then for department R 90 hours into rupees 5 per hour 450 rupees. For Q 60 hours into 3 180, and for P 30 hours into 2 rupees we will receive 60. So the total wages for job number 107 are 1590 rupees. Okay friends, after that we are going for calculation of total overheads for each departments. यहाँ हमें जो चारों डिपार्टमेंट्स है उसके जो वेरिएबल ओवरहेड्स है वो दिए गए हैं. दैट इंक्लूड्स फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज सेलिंग ओवरहेड्स. तो हम ये चारों जो डिपार्टमेंट के अलग अलग ये तीन ओवरहेड्स है उसका हम टोटल करेंगे. फॉर एस डिपार्टमेंट this total 12 plus 6,000. So total variable overheads for S department are 30,000. Same way for R department the total of all these three overheads is 22,500. For Q department total of these three overhead is 12,000, and for the last P department total of these three overheads is 1,500 rupees. Okay friends, after that we are going for the calculation of total overhead rate. What that means? It means that here total overheads of each department will divide with the total number of labor hours of each department. So we will receive rate per labor hour. For S department total overheads are 30,000 as we have calculated just now. We will divide by the total labor hours of S departments which are 5,000 hours. So 30,000 divided by 5,000. So here the answer is rupees 6 per labor hour for department S.
Same way we will continue for department R. Our total overheads are 22,500. We will divide it with 4,500 hours. So here 5 rupee per hour labor hour rate. For Q department 12,000 total overheads, we are going to divide with 3,000 hours. So here rupees 4 per labor hour rate. And for the last department P, total 1500 rupees overhead, divide by 500 hours. So here rupees 3 per labor hour we have received. So in this calculation we have got labor hour rate for each department for total overheads. Okay friends, after getting per hour labor rate for total overheads for each department, we are going to calculate these overheads for job number 107. So for S department total 150 hours are there and per hour labor rate is 6 rupee, we have just calculated. So total overheads for S department for this job are 900. For department R 90 hours into 5 rupee per labor hour rate. So total 450 overheads. For Q 60 hours into rupees 4 per labor hour rate. So total rupees 240. And for department P 30 hours multiply with rupees 3 per labor hour rate. So total 90 rupees. So we have received the total overhead for job number 107. Now we are going to make addition total of all this. So the total variable overhead of job number 107 are rupees 1680. Okay, now we are going for the calculation of fixed overhead for job number 107. Just now we have calculated the variable overhead. Now it's time to calculate fixed overhead. How to calculate it? ये बहुत ही इजी है. जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स है उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल नॉर्मल आवर्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन और मल्टीप्लाई करेंगे जो चारों डिपार्टमेंट के टोटल आवर्स है जॉब नंबर 107 के लिए उससे. So here total fixed overhead are 85,000 rupee. We will divide it by 17,000 normal hours and multiply with 330 hours for job number 107. ये 330 जो चार डिपार्टमेंट है S, R, Q और P उसके जो आवर्स है उसका टोटल है 330. So simplifying this, तो you will receive total fixed overhead for job number 107, that is rupees 1650 rupee. Okay, now we are going for the last and main answer, that is calculation of cost and selling price for job number 107. job number 107 के लिए हमें टोटल कॉस्ट ढूंढनी है और सेलिंग प्राइस भी. तो ये हम स्टेटमेंट यहाँ प्रिपेयर करेंगे दैट इंक्लूड्स पर्टिकुलर एंड अमाउंट. सो वी आर स्टार्टिंग विद मटेरियल एंड लेबर. मटेरियल फॉर जॉब नंबर 107 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज रुपीज 9,000. जो लेबर है तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर ली है द टोटल लेबर required for this job number 107 is 1590 for all 4 departments. So total of material and labor is prime cost. So prime cost for this job is 10,590 rupees. उसके बाद हम ऐड करेंगे वेरिएबल ओवरहेड, टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर जॉब नंबर 107. तो जो भी हमने काउंट ऑलरेडी कर लिए हैं इन अ वर्किंग नोट, these overheads are 1680. आफ्टर दैट विल एड फिक्स्ड ओवरहेड. तो जो भी हमने अभी अभी काउंट किए हैं विच आर रुपीज 1650. So by adding these variable and fixed overhead to prime cost, we will receive the total cost for job number 107. Total cost is 13,920 rupee. Okay. After that we are going for calculation of selling price, because in this question it is given that find out the selling price when profit is 25% on selling price. Here profit is 25% on selling price. तो याद रखिए here we do not have selling price. हमारे पास यहाँ
सेलिंग प्राइस नहीं है, सो वी आर गोइंग टू एज्यूम, वी आर एज्यूमिंग दैट के सेलिंग प्राइस इज ₹100. नाउ 25% ऑफ सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट, तो 100 का 25% होगा 25 रुपीज, तो यहाँ प्रॉफिट होगा इस एजम्पशन में 25 रुपीज, सो वी आर गोइंग टू डिडक्ट 25 प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग प्राइस, तो वी विल रिसीव 75 रुपीज, दैट इज कॉस्ट. तो अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की मदद से आगे बढ़ेंगे. तो आई हैव रिटन हियर कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस. So as per assumption, when cost is 75 rupees, at that time selling price is 100 rupees. So in this question, the total cost we have found is 13,920. Then what should be the selling price? Now we will apply cross multiplication. 13,920 into 100 divided by 75. By simplifying this, we will receive selling price for this job. So selling price for this job is 18,560 rupees. ओके फ्रेंड्स, तो फिर से हम ये जो कोस्ट शीट है वो कंटिन्यू करते हैं. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द टोटल कोस्ट, दैट इज 13,920. अब हमने सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 18,560. तो अब मैं यहाँ सेलिंग प्राइस रख दूंगा और टोटल कॉस्ट भी है. तो नाउ इट्स वेरी सिंपल, फ्रॉम सेलिंग प्राइस आई विल डिडक्ट टोटल कॉस्ट. सो जो डिफरेंस मिलेगा दैट इज पॉजिटिव, इट मीन्स इट इज प्रॉफिट फॉर द करंट जॉब 107. दिस प्रॉफिट इज ₹4,640.